Hello everyone. 2014 the balances of their capital। तो देखो चीज ध्यान देना 63 क्वेश्चन में सबसे पहले 31 मार्च को उनने आपको कैपिटल बैलेंस दिए हैं 3,20,000, 2,40,000 एंड 1,60,000। तो 31 मार्च लास्ट डेट को अगर कैपिटल दी होती है तो वो क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल? So first thing in question, they have given us closing capital. Closing capital is given 3,20,000, 2,40,000, 1,60,000. Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing omitted. तो दो चीजें देना भूल गए हैं, एक आईओसी देना भूल गए हो जो कि कितना बोला है इनने 10%, और एक आईओडी नहीं दी है जो कि कितनी दी है इनने 5%। तो दो चीजें आप ओमिट कर गए हो देना। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन 90,000। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है 90,000 एंड ड्रॉइंग्स दी हैं ईशा एंड मानव की 48,000 middle of each year, middle of every month, and दमन की दी है 60,000 during the year। रेशो दिया है आपको 3:1। कोई आइडिया हाउ टू डू दिस न्यूमेरिकल नाउ? First thing, IOC is to be calculated. So interest on capital is calculated at what capital? Which type of capital it will be going to calculate? Opening capital or closing capital? Opening capital. So in question they have given us closing capital. So already I had discussed with you that when closing capital is given, we have to calculate convert it into opening capital. So what is the formula to make it opening capital? बताओ ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Closing capital drawings interest on drawings minus profit plus minus salary equals to opening capital। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अभी कैलकुलेट करना है इसलिए उसको यूज नहीं लेंगे, माइनस प्रॉफिट। सैलरीज भी दी नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, बस इतना फॉर्मूला यूज करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन अस 3,20,000, 2,40,000 and 1,60,000. Interest, a drawing is given 48,000, 48,000 and 60,000। प्रॉफिट जो दिया है उनने टोटल दिया है 90,000। तो 90,000 को सबसे पहले हमें रेशो में बांटना पड़ेगा क्योंकि फर्म का पूरे पार्टनर्स का प्रॉफिट है 90,000। तो 90,000 को आपने 3:1 में बांटा, तो 3:1 में बांटा तो कितना आ जाएगा? 15,000, 30,000 और 45,000। यही आ रहा है। We have to subtract, so we have written in bracket. Now calculate opening capital। कितनी आ रही है opening capital?
कितनी आ रही? ओपनिंग कैपिटल 3,23,000 पहले की आई, दूसरे की 2,58,000 and third one 2,05,000. यही आ रही है सबकी. This much is clear how to calculate opening capital. Okay. Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. you can calculate interest on capital at least here only. So interest on capital you have to calculate 10% of opening capital. तो कितना आ जाएगा? 32,300, 25,800, 20,500. दो चीजें भूल गए हैं क्वेश्चन में. वन इज IOC एंड सेकेंड इज IOD. So first we have calculated IOC. Now second part we have to calculate IOD. Clear? So now we have to calculate interest on drawing. This much is clear now? Yes, miss. So when we are calculating interest on drawing, so interest on drawing formula is total amount into rate upon 100 into middle of the year बोला है. तो middle of the year में क्या होता है? 6/12. Even during the year भी बोला है, तो during the year में भी क्या होता है? 6/12. So we have to apply this formula. So Miss, keep repeat the formula. what beta? Miss, repeat the formula. Total amount into rate upon 100 into 6/12, because they have given middle of every month and during the year. When these two words are given, so always we are using 6/12. So now calculate interest on drawing for Isha, Manav and Daman. Isha and Manav, same amount will be going to come, because their drawing is given 48,000, rate is given 5% and 6/12. So calculate it, what is coming? What is coming beta? 1,200. And Daman value is coming 1,500. Done this much now. This much is clear to everyone. Now next step we have to make analysis table. So this much we have copied so that I will rub. Yes, miss. Now we have to make analysis table. Analysis table particular Isha, Manav, Daman and firm. Debit
credit. So now what to do in credit? IOC and IOD both they have omitted. So omitted things will be coming under debit or credit? Credit. Credit. That means first we have to write credit side IOC. So IOC came 32,300, 25,800 and 2,500. IOD plus होता है कि minus? It will be added or subtracted? Subtracted. Yes. So it will be subtracted. 1,200, 1,200 and 1,500. Now what is the value coming? This much is also clear. Yes, miss. Next step, what we are doing, we have to add these values and write in the form column. So after that, anyone please tell me what we have to do. Total of, see, this much is only coming. Yes, miss. Yes, miss. So this 74,700 will be distributed in 3 to 1. This much came. Now what we have to do? We have to subtract and add and we have to calculate debit and credit. तो इसमें से इसको माइनस करिए. टोटल वैल्यू को माइनस करो. 6150. It will be debit or credit? डेबिट. 61 ही आ रहा है कि 62 आ रहा है? 62. Next one, it is coming. Debit or credit? And then next Daman is coming. And now pass the journal entry. Clear, beta? Clear to everyone or not? Yes. Okay. Here it is coming 24. Then only it will be coming 300. So now pass the journal entry. Isha debit. Manav debit. To Daman. 6250. 300.
6550. क्लियर बेटा? When board is not बोर्ड इज नॉट. After that, one more first important question, question number 69, that I am explaining. After that, question 60 I will be going to explain, because question number 69 is important one. Written? Done? yes, ma'am. Now question number 69. Read the question I am explaining in short, then what you are getting the question. See, question number 69 is saying us that ABC were partners, and on 1st April their capital is given 50,000, 25,000 and 25,000. मीन्स हमारी टेंशन खत्म है, क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल दे हैव गिवन अस. नाउ अकॉर्डिंग टू डीड, मेंशन इन डीड, C will get salary 1500 per month, interest on capital 5% per annum, and profit is distributed in capital ratio. Net profit 45,000. तो these all things omitted. ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कर चुके हैं, omit कर चुके हैं, and they have distributed whole profit. Whole profit means full 45,000 in equal ratio. Get the question? What the question is saying us? Clear the question, then we will start the solution. Yes, ma'am. Okay, so what mistake they have done? They have omitted salary, interest on capital, and to distribute profit, but they have wrongly done that whole profit they have distributed equally. So first, anybody is knowing how to calculate capital ratio? First work you learn how to calculate capital ratio. So capital ratio, how we are calculating?
We will write their capitals. And cancel it. Make it smaller. 0, 0 cancel. And it will be coming 2:2, 1:1. So this is your capital ratio. Clear how to calculate capital ratio? Please explain. You will write their capitals. Partners की capitals लिखो और partners की capital को cancel कर दो. 50,000, 25,000, 25,000. 0, 0 cancel. बचा 50, 25, 25. So it will be cut by 25 tables. So 25 ones are 25 ones are 25 twos are. So your capital ratio is 2:1 to 1. Clear? आ गया समझ में कि नहीं आया इतना पहले? Yes, yes. Now we have to make analysis table. So analysis table. A, B, C and firm. Debit, credit. So now वो क्या कर चुके हैं? 45,000 को इक्वल रेशो में बांट चुके हैं. तो बताओ इसको डेबिट आना चाहिए कि क्रेडिट? So 45,000 they have distributed in equal ratio. So tell me it will be coming debit or credit? बेटा बांट चुके हैं, गलती कर चुके हैं. तो गलती कर चुके हैं तो 45,000 को हम डेबिट में बांट देंगे. तो इट विल बी कमिंग 15,000 एंड 15,000. डीड में जो जो लिखा है वो हम क्रेडिट में देंगे. तो डीड में सबसे पहले लिखा है सैलरी देनी है 1500 पर मंथ. तो हमें साल भर की निकालनी है. तो साल भर की कैसे निकालेंगे? Into 12. Yes, so it is coming 18,000. Interest on capital. Interest on capital निकालो आप 5%. यही आएगा. देखो ऊपर फॉर्म के में 45,000 बांटा है तो नीचे भी कितना आना चाहिए? 45,000. तो अब ये 45,000 में से इन दोनों को माइनस करो तो देखो बैलेंस कितना आएगा, जो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट. निकालो प्रॉफिट कितना आ रहा है. 45,000 को 23,000 से माइनस करिए. ये दोनों ऐड करके 23,000 आ रहा है. तो 45 में से 23 माइनस करो तो बैलेंस कितना बचा? 22. 22. इस 22 को किस रेशो में बांटना है? कैपिटल रेशो में. क्वेश्चन में कहा है कैपिटल रेशो में बांटने के लिए. डीड में कहा है कैपिटल रेशो में बांटा. आया? क्लियर ना क्या किया? अब आप ऐड कर लो. तो ये आपका आ गया 13,500. ये आपका हो गया 6,750 और ये आपका हो गया 24,750. Okay. Now you compare this total value with this total value. You will get your book answer. So it is coming 1,500 debit. How much it here will come?
8250 और इन दोनों को माइनस करो तो 9750. Now pass the journal entry. So it is clear, beta. After comparing debit and credit, A will be debited, B will be debited, and C will be credited. So our journal entry will be A capital account debit, B capital account debit to C capital account. Clear the journal entry? A capital debit, B capital debit to C capital 1500, 8250 and 9750. Okay. Keep studying.